Good morning, students. Students, in the previous lecture, we have seen how we can find the general solution of a linear differential equation. Now, in this video, we will see how we can find the particular solution for a given linear differential equation. So, let's understand the process with the help of examples. So, here the question is, find a particular solution satisfying the given condition for the following differential equation. First question is, dy by dx plus 2i tan x is equal to sin x, and it is given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 3. So using this condition that y is equal to 0 when x is equal to pi by 3, we have to find the particular solution for the given linear differential equation. Now to find the particular solution, first we have to find the general solution. So let us find the general solution first. If we write this differential equation in the standard form, then we will get dy by dx plus px into y is equal to qx, and here in place of px we will get 2 tan x and qx is equal to sin x. ठीक है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो y के साथ में क्या मिलेगा, आपको 2 tan x मिलेगा. सो px इज इक्वल टू 2 tan x और qx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, sin x. नाउ टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to the power integral p dx, and in place of p we have 2 tan x. So integrating this, now we will get e raised to the power 2 into integration of 2 tan x, integration of tan x means log sec x. So this can be written as e raised to the power log sec square x, which means sec square x. So integrating factor is equal to sec square x. Now we will write y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx, and in place of integrating factor we have sec square x, so we will write y into sec square x is equal to integration of q is equal to sin x into sec square x dx, and this can also be written as sin x upon cos x, that is tan x into sec x dx, and integration of sec x tan x is, we know that it is sec x plus c. So y sec square x is equal to sec x plus c. Now this is the general solution of a given linear differential equation, because it involves a arbitrary constant. क्योंकि इसमें arbitrary constant present है, इसलिए इस solution को हम क्या कहेंगे, general solution कहेंगे. But we have to find the particular solution. So to find the particular solution, we have to find the integration constant c, and to find the integration constant c, we are given y is equal to 0 when x is equal to pi by 3. So putting y is equal to 0 and x is equal to pi by 3, we will get 0 into sec square pi by 3 is equal to sec pi by 3 plus c. So it will give 0, and sec pi by 3 is 2, sec 60 is 2. So 2 plus c is equal to 0, which means c is equal to minus 2. Now putting this value of c in the general solution, we will get the required particular solution. Y into sec square x is equal to sec x minus 2. This is the particular solution for the given linear differential equation under the given conditions. Now let's solve the second question also. Now in the second question, find the equation of a curve passing through the point 0, 2, given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve
at that point by 5. It means हमें वो कर्व फाइंड करना है जो कि पॉइंट 02 से पास हो रहा होगा और उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स का सम होगा दैट विल एक्सीड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बाय 5. तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व है C जो हमें फाइंड करना है और इस पे कोई पॉइंट होगा कहीं पर R, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 02 होंगे. इट मीन्स ये कर्व R से पास होगा एंड ये भी गिवन है कि इस कर्व पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, सपोज दैट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स का सम होगा इट मीन्स एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी इट विल एक्सीड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy बाई डी एक्स. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से वैल्यू जो आएगी एक्स प्लस वाई की वो 5 ज़्यादा आएगी. इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको dy बाई डी एक्स प्लस 5. तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करके इस रिक्वायर्ड कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है. एंड इफ वी राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म देन वी विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई minus 5 and this can also be written as dy by dx minus y is equal to x minus 5. So this is the standard form and if we compare it with the standard linear differential equation then we will get px is equal to minus 1. ठीक है, y के साथ में यहाँ पे क्या है -1, so px is equal to -1 and qx is equal to x minus 5. Now first we have to find the integrating factor. तो integrating factor find करेंगे पहले. Integrating factor is equal to e raised to the power integral p dx and here in place of p we have -1. So integration of -1 into dx is equal to e raised to the power minus x. This is the integrating factor. Now to find the general solution we will write y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx. Integrating factor is e raised to the power minus x, so y into e raised to the power minus x is equal to integral q is x minus 5 and integrating factor is e raised to the power minus x. So now if we integrate this by using by part then the obtained solution will be general solution. Now by parts जब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, so here the first function will be x and second function will be e raised to the power minus x. ठीक है, क्योंकि algebraic function है x और e raised to the power minus x क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. So इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power minus x is minus e raised to the power minus x minus इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन e raised to the power minus x is minus e raised to the power minus x. और फिर इसका होल इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power minus x is minus e raised to the power minus x. तो ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू e raised to the power minus x with some integration constant c. Now this can be written as minus x e raised to the power minus x और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और फिर से इंटीग्रेट करेंगे e की पावर माइनस एक्स को तो अगेन माइनस हो जाएगा ये. ठीक है, सो माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 e raised to the power minus x plus c, and this can be written as minus x e raised to the power minus x. 5 minus 1 it will give 4 e raised to the power minus x plus integration constant c. So y into e raised to the power minus x is equal to minus x e raised to the power minus x plus 4 e to the power minus x plus c. This is the general solution, and this can also be written as, if we divide the whole equation by e raised to the power minus x, then we can also write it as y is equal to minus x plus 4 c e raised to the power x. ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर पूरी इक्वेशन को e raised to the power x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा हमको, and it involves arbitrary constant c. So this is general solution.
ये जनरल सोल्यूशन है, बट हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड कर्व है इट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट R, और इस पॉइंट R पर x कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। So putting the value of x as 0 and the value of y as 2, we will get y के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे और x के प्लेस पे 0, so we will get 2 is equal to 0 plus 4 plus c e raised to the power 0, which gives 2 is equal to 4 plus c e raised to the power 0 is 1, which means c is equal to 2 minus 4 minus 2. Again we will get c is equal to minus 2. So putting this value in general solution, we will get the required particular solution. Y is equal to minus x plus 4 plus minus 2 into e raised to the power minus x, which can also be written as x plus y is equal to minus 2 e raised to the power minus x plus 4. This is the required particular solution. So in this way you can find the particular solution using the given conditions for any linear differential equation. और जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी इस टाइप की, तो आपको पहले क्वेश्चन को रीड करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा, खुद ही फ्रेम करना पड़ेगा, और फिर जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, और फिर कंडीशंस को यूज़ करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। Note down all these questions and solve them. Thank you.